And Nitin sir, please join this. Sir, yes. Sir, after yes. Sir, Again? Sir, please. As per either corner. Kaushik ji. मैं अभी कार्यक्रम का शुरुआत करने चाहूंगा। तो इसमें हम कौशिक जी का जो APS इंटरनेशनल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में हमारी काफी मदद करी। I'm very thankful to Kaushik ji, Aaron Kaushik ji. Now I invite Kaushik ji to come on this and have a few words from this program. Good morning, everyone. I'm so happy to see all of you here. All of you are energy efficient people, that's why you are there. We have welcomed the Green Tree and this team to Nagpur first time. They are going to give us some knowledge about as to how we can do our efforts in energy conservation and energy savings better. Major focus is going to be on ISO 50001, which is basically getting to be a pre-requirement for exports to Europe in coming times. And we also requested them to give us some more evaluation on as to how we can conserve more power, how can we be more efficient in power conservation. So I think after this visit and after this presentation, there will be follow-up visits from Green Tree and from this team, which will help us, maybe sometimes even handhold us to save more and more power. So I won't take much time so that we already late. We are sorry for that. I would request that we pay due attention to the things which are being to us and take it into a stage where we implement everything. Thank you very much. thank you, sir. I invite Kaushik sir, just give me a word of thanks for our end.
इधर सामने आ जाइए, सामने कर। हाँ हाँ, इस front। We have now Mr. Professor Mohan Khedkar, sir. He is an esteemed academic and professional with an impressive career spanning decade is recognized for his significant contribution to the fields of electrical engineering and energy management. Serving his he is as the ex-vice chancellor of St. Gage Baba Amravati University. Professor Khedkar has also held this numerous prominent positions, including vice president of the Society of Energy Engineers and Managers SEAMS, and twice as head of the electrical engineering at VNIT Nagpur. So his accolades includes the Maharashtra State Best Engineering Teacher Award and Distinguished Alumni Honors from the both RTM Nagpur University and Hadas High School. Professor Khedkar is a prolific author, patent holder, and guide to 9 PhD scholars. His publication exceeds 170 papers in esteemed national and international journals and conferences. He a certified energy auditor. Professor Khedkar has chaired and conveyed multiple international and national conferences on energy, sustainability, and technical education. His global engagement is evident in his visits to over 10 countries, presenting research and forecasting collaborations. A life fellow and senior member of renowned technical societies, Professor Khedkar has embodied excellence in engineering, academic, and sustainability. Now I invite Mr. Professor Khedkar to just be on stage and have you present a keynote on this training program. I will just welcome Mr. Professor Khedkar. So please. अगर आपने आइडिया छोड़ा तो लॉक हो जाएगा. Thank you. So please. Very fine. Good morning to all of you. Well, good come. I know it's a bit cold winter day. We rise a bit late, right? Then a cup of tea, right? If possible, a bath in winter. And then to attend a training program like this, till lunch at least it is okay. Post lunch it is still more difficult. Not for you, for the trainers. Anyway, with that brief introduction, probably you must have seen that I am an academician. So we work in the four walls of the institute. And whatever has been said is of course true as far as the biodata is concerned. And then I'm also working with another organization as a vice president, that is the Society of Energy Engineers and Managers. And that also is working for the Decarbonization India Alliance. Here, of course, I am very much thankful to the Green Tree for calling me over here. And they have organized a one-day workshop on ISO 50001 Energy Management System. And that's a training program, of course, by VI, VEE, GIS, and MSc MEDA cell. And the total responsibility is mine because I think there is no representative from VI, am I right? And also from MEDA.
तो मैं थोड़ा भी ज्यादा टाइम तो तुमको बोर करूंगा, सभी का समय मुझे दिया गया है, जो जो 10-10 मिनट थे उनके। Now let us see about what we talk about the energy, what we talk about ISO 50001. The basic one thing which we have to remember in life is excellence is a journey, it's never a destination. So with whatever ISO we go, always there will be scope for improvement. And as you know, in a technical knowledge, there are no full stops, but only commas. And I wish that your name should be in inverted comma, right? Whenever you go in your field as an energy auditor, or whichever field you are representing, probably you should shine over there. You know that it all started with ISO 9001, where we thought of improving the quality of the product in the industry. Then it was 14001, where we talked about the environmental aspects. And more recently, from June 2001, ISO 50001, wherein we are talking about the energy. And when we talk about the energy, it covers the first two aspects also. That is the quality, which you are thinking of the industry, and the environmental aspect also. Apart from that, we are also adding to the energy. And as I said, as we grow, probably we will go on adding more and more things. In English, we say, change is the only thing in this world which is constant, everything else changes. So if man has to progress, change is a must. When I graduated in 1980, probably I think I am the oldest among them all. सबसे बूढ़ा आदमी मैं हूँ लगता है। 80 के पहले कोई ग्रेजुएट है इसमें नहीं है। In those days, you know, in electronics, we used to study walls. जिनके वो पुराने रेडियो थे, उनके घर में वॉल रेडियो होता था एक, और वो चलता नहीं था तो उसको एक झापड़ मारते थे, फिर वो चल जाता था. There were no semiconductors. There was nothing like a transistor. Right? Subsequently, the things have come up. And now, of course, we talk about LSI, VLSI, very large scale integrations. And probably day ahead, as I think, when our great grandchildren will be there, it may be the solid state electronics may be replaced by a liquid state electronics. And when I say so, it has got some base as far as I think, right? This is my thinking. You know, when I used to explain the SCADA system in the college, or even in the lectures, you know, they used to say what it is. I say you yourself, you are a SCADA system. हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी SCADA system से बहुत ज़्यादा है. बोलते कैसा है? आप रास्ते से जा रहे हैं. I think all of you are acquainted with Hindi also, right? Hopefully. Yes. If you mix it's like around ज़्यादा नहीं. रास्ते से जा रहे हैं. कार चला रहे अपनी कोई बीच में आता है. What you do? क्या करते हो? क्यों एक्सेलेरेटर क्यों नहीं रेस किया? ब्रेक क्यों मार दिया? बचाना है उसको. उसको बचाना है. ये कैसे समझा आपको बचाना है करके? What is the process which has occurred behind that? What I mean to say, is it not? कैसे शुरू हो? How it has started? You have seen it through your eyes, so that's your input. Here it may be a keyboard or something which you type. Then it has gone to your CPU, your brain, right? The CPU has got enormous memory with the enormous programs. And also one more thing apart from computer is that even if
the program is not stored there, it can make a program of its own. For example, I will give you. कंप्यूटर इसमें कैसे है कि जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड है वही होगा उसमें. अभी यहाँ पे आग लग गई तो भाग के जाना है, उसमें नहीं है स्टोर. आप उठ के नहीं जाएंगे, जाएंगे ना सब लोग. क्यों जा रहे हैं? Because even if the program is not stored, but it has got a capacity to do that, right? जो हम gigabyte वगैरह वो सब बात करते हैं ना, उससे अपना मेमोरी बहुत ज्यादा है. Then that CPU is processed. Now it has given you output. यहाँ पे हम जैसा वीडियो देख रहे हैं, some output signal you are having. There, what was the output? It used to tell your hand or leg whether the handbrake or leg brake is there to operate. And then you operate it, and the brakes they get applied. Now, can you tell me the time how much it has taken? ये सब प्रोसेस हुआ कि नहीं उसमें? पूरा हुआ है? ये बाईपास किया हमने, देखिए ना, इसमें से एक भी बाईपास नहीं हो सकता. Right? The input, the signal to a CPU, right? CPU has got some memory. From there, it has taken a program. If not, it can make on its own the decision making. Then it has given output, and then you applied the brakes. And how it has happened? This is all liquid state electronics. यहाँ पे solid state है नहीं है. So I am saying that that may be the next. So as we go on advancing, the things are going to change. So here also, when we talk about ISO 50001, we talk about the energy, and we know that our honorable president has said that we have to achieve net zero by 2070, right? So all our carbon emissions should be zero. Now, as far as India is concerned, our population has got some advantage. बहुत बार हम बोलते हैं ना population के disadvantage ही है, उसका कुछ advantage भी होता है. I can tell you one. The per capita CO2 emission of India is comparatively less because it is the total CO2 emitted divided by population. अगर population कम होता है तो अपना CO2 emission बहुत ज्यादा होता है. All the time population increase is not bad. At times it's good also, right? So per capita CO2 consumption, emission is less, not because that we emit less, it is because the denominator is greater. And then in this 50,001, we are going to see as to how we can save this energy, as the electricity board says that energy saved is energy generated. And in our case, if we talk about the Indian situation, we know those who are electrical engineer probably they will be acquainted with the T&D losses. So now is a T&D losses term? Transmission and distribution losses, right? How much you expect them to be? 20%. And in the developed countries, how much they are? 5 to 6%. और अपने 20% है. क्या कारण है इसमें? हमारा efficient नहीं होता, copper, aluminium, or the iron core which we are using. Is that the reason? From 6% he is saying 20%, but of course earlier it used to be 30 plus. Now of course we started, and as I said that now we are used. You know, this was some about 20 years back. I was delivering one seminar in Institute of Engineers, and it was in front of all MSCV engineers, unfortunately. And then I said, in those days, this is about 20-25 years back, the T&D losses in Maharashtra, at one of the places, I can tell you the place also, Bhiwandi, near Mumbai, is 70%. And you know what happened? So हम लोग वहां से उठ गए, सर आप गलत फिगर बता रहे हैं, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप 70% है, इतना नहीं है. हमने कहा भाई कितना है? सर it is 65%. I said okay, I'm sorry, it's 65%. So when we say so, do you think that there are losses? It is thefts and dacoity. And it cannot be a loss. It is simply because it is unmetered, you are not paying for it.
And there are many situations in India like this. This is one of the examples, right? गांव में तो अपने होता है ना, नदी बह रही है तो पानी भी फ्री है, अगर वहां से लाइन जा रही वो हुक डाल के पंप से आपको खेत को पानी भी देता है, पानी भी फ्री, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री, उसको थोड़ा पैसा दे दो वो भी खुश, और हम तो बहुत ज्यादा खुश है, सब पॉकेट में मिल गया करके. Indians are happy as soon as they get the things free, right? We say that we use subsidy. No, at what cost you are giving subsidy? It is at the cost of others, is it not? Is the electricity board or the utility they are going to run in losses? No. If somebody is subsidized, it means somebody is paying much more. It is something like income tax. You know how many income taxpayers are there, right? पता है ना सबको कितने और कितने होना चाहिए ये भी पता है, थोड़ा बढ़ रहा है अभी fortunately. Similarly, the energy also, from the T&D losses of more than 30-35%, now we are reducing. And when we say that we want to become a developed country, probably we may achieve it as less than 10. And that's what our aim should be. And so when we talk about all these energy measures, in 50,001, what we talk about? We say that you go to the industry, you visit it, you do the preliminary audit, you can tell them some measures, and then try to act and see the results, check the results. You know, I was in Amravati University as a vice chancellor for 5 years, and he was doing in government organization what happens. यहाँ पे किसको लाइट बंद करने को बोला तो मैं थोड़ी बिल दे रहा हूँ, घर में करे बंद कर, इतना इधर फैन लगा कर, उधर एसी लगा कर करते हैं घर में ऐसा, और ऑफिस में आए तो या पब्लिक प्लेस में हम नहीं दे रहे. Can you tell me who is paying for it? We are paying it. Is it not? Finally, who is paying? It is the taxpayers' money which is going. Simply, it is our thought that we are not doing. You know, in Japan, I visited about 30 years back, and if there is a single message on a radio or a TV or in the trains also, that you have to switch on only 2 lights today because of some problem in the electricity generation, people may use only 1 light. हमारे यहाँ बताओ तो, अच्छा 2 बता रहे क्या? अरे 4 लगा था, पैसे नहीं दे रहे क्या हम? हैं? भूखट के थोड़ी ले रहे. Our national spirit, we have national spirit, but only on 2 days. 10 days ahead now. 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त. 2 दिन बहुत पैट्रियोटिक रहते हैं, बाकी 363 दिन. If we tell him to switch off energy, nobody. So I tried there. I said, okay, you can't do it on and off. I also agree, being a government issue. I said during lunchtime, at least you do that. जब लंच को जा रहे हो आप, तो वहां पता है आधे घंटे का लंच मतलब कितना होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, बताने की जरूरत नहीं आपको, है ना? तो उतना देर ऑफ कर दो भाई, और आपको फिर से लगाओ, पूरा लगाओ. बीच में तो जब जाते हो रूम छोड़ के और बंद करो, अगर इतना मत करो. And you know, we saved few lakhs of rupees. So even all the small measures which we take, which we think are small, a small steam leakage, a small compressed air leakage, everything matters over there. And so this ISO 50000 as to how to improve, how to increase our efficiency. In case even how to go for the alternate energy sources. And today we will talk about renewable. A day is not far off when you will see a hydrogen line from Nagpur to Bombay along with Samruddhi. Why I am saying so? Because the hydrogen you can tap, you can use it as electricity, you can use it for heating, and you can also use it for your vehicles. So the energy paradigm, the carbon which you are thinking, that will totally change.
right? Because there we make the waterfall charts, right? So on the y-axis, you have got the GHG emissions, greenhouse gas emissions, and on the x-axis, you plot the short-term, medium-term, and long-term measures. And then we see that from this GHG emission, finally with all that, how much we can reduce it to. And if we achieve that, we say, yes, we have done something. So these carbon footprints, we have to reduce as much as we can. Now, to reduce it, as I said, there are so many measures which you can have. You can have the alternate energy sources, but finally the goal is net zero. And when I say net zero, it is useful for all of us. For a utility, it is useful. For a common man, it is useful, and much more for the environment. We talk about the global warming. Is it not? And how this global warming can be reduced? If your CO2 emissions are less, what will happen is that your global warming will go on reducing. And so, in Sanskrit we say, Manasa Vacha Karmana. Think, speak and act. और प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम इससे टोटली उल्टा करते हैं एक्ट पहले एक्शन कर लेते हैं सही हो या गलत फिर उसको जस्टिफाई करते बोल कर नहीं वो मैंने वैसे ही किया वही सही था तुमको पता नहीं वो वैसे ही रहता है वो नागपुर में ऐसे ही करते हैं यू ट्राई टू जस्टिफाई इट एंड देन एट द एंड यू थिंक फिर लगता है अरे नहीं यार तो मैंने सारा गलत ही किया था पर चार लोगों के सामने बोलूं कैसे मैंने गलत किया राइट सो यू ट्राई टू जस्टिफाई योर एक्शन So here, if we go for the energy measures, as told by them, as specified in ISO 50001, and why it is needed, as I said, I can give you examples. मास्टर आदमी ने एक बार खड़ा हुआ तो 1 घंटा ले लेता है लेक्चर yeah within 2-3 minutes I will finish off. One more example I will give about this one why it is needed. You know, the same organization which we are working there, Decarbonization India Alliance is a program wherein we are working on the cluster, the foundry industry in Kolhapur, right? And you know, all their processes, they are the normal processes by which they do all their forging, furnaces, etc. They are exporting it to European Union, and now the European Union is asking them about the carbon footprints. And now they have to improve. So when you have to implement ISO 50001, it has almost become mandatory now for whichever industry you are working. I will give you one example. There can be hundreds of examples like that. And I hope that today you will enjoy both the sessions and hope that together we can develop in India, which will be a developed country, as our Honorable Prime Minister dream is, by 1947 will be a Vishwa. So I wish you all the best for that. And then at the end I will only say, माना किस जहां को गुलशन न कर सकेंगे हम, माना कि इस जहां को गुलशन न कर सकेंगे हम, हाँ कांटे कुछ कमी कर जाएंगे, हाँ कांटे कुछ कमी कर जाएंगे, जिधर से गुजरेंगे हम, इधर से गुजरेंगे। धन्यवाद। Thank you.
प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही अच्छी इंसाइटफुल थिंग्स और सारी चीजें बताई हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पीयूष शर्मा सर, that he is an experienced technical expert from GIZ, and he is having more than 15 years of experience and in the multiple energy fields, that is energy management, thermal and power plant operation expert also, and DCS in thermal power plant on as well. Now I would like to invite Mr. Piyush to come and just give him insight on those things. थैंक यू रमेश जी। कोई नहीं, जब तक वो चल रहा है। अच्छा, मीनवाइल कितने लोग लेट्स से स्टील इंडस्ट्रीज हैं, कितने टेक्सटाइल्स हैं, स्टील वाले जो हैं वो एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। टेक्सटाइल, ओके, और बाकी किससे हैं? पावर से हैं, ओके। कौन से पावर प्लांट्स हैं? ओके, और भी कोई सेक्टर्स हैं? एनर्जी ऑडिटर्स, कंसल्टेंट, आप? माइनिंग, ओके, सोलर एनर्जी, गुड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जैसे कि सर बता रहे थे, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्वियसली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट स्टेज इज टू अंडरस्टैंड योर एनर्जी कंजम्पशन। अगर आपको कुछ कम करना है तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कितना यूज कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं, तब तक आप कम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ISO 50001 में आज पूरे दिन आपको यही बताया जाएगा। वेंकट जी और अंकुर जी हमारे साथ, तो ये आपको दिन भर यही बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या नॉन कंफर्मिटीज होती है, और कैसे आप अपने प्लांट को सिर्फ ISO सर्टिफाई ही नहीं करा सकते बल्कि एक्चुअल में अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं और काफी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेटर भी हो सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपके मन में ये है कि GIZ क्या है और ये प्रोग्राम क्यों करा रहा है, तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में GIZ के लिए देता हूँ। तो GIZ एक जर्मन गवर्नमेंट कंपनी है। वी आर नॉट कंसल्टेंट्स, हम कंसल्टेंट्स नहीं है। और तो जब UN बना था तो ये एक नेगोशिएट हुआ था कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सारे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए अपने नेशनल इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज कम करेंगे। तो यहाँ से दो तरह के प्रोग्राम निकल के आए, एक मल्टीलैटरल और एक बायलैटरल। तो मल्टीलैटरल प्रोग्राम वो था जहाँ पे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज एक किटी में, एक कॉमन किटी में पैसे डालते हैं और उस पैसे को यूज करते हैं कोई डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये होता है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का एग्जांपल अगर आप में से कोई जानता हो, जेफ फंडेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, UNDP के, यूनिडो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सारे मल्टीलैटरल्स में आते हैं। दूसरा जो तरीका था वो था बायलैटरल प्रोजेक्ट। बायलैटरल का मतलब था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है, उसमें कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आ रही है। तो जो GIZ है ये एक बायलैटरल प्रोग्राम है। बायलैटरल के अदर एग्जांपल्स हैं जैसे US एड हो गया, स्विस एड हो गया, फ्रेंच एड हो गया, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे बायलैटरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो GIZ भी एक बायलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो वी पार्टनर विद इंडियन मिनिस्ट्रीज। जैसे अभी जो करंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके साथ है। And in India, we are working since last 60 years. The first support was the establishment of IIT Chennai. उसके बाद फिर even in Aadhaar card implementation, प्रधानमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो फर्स्ट सोलर पैनल्स लगे थे ऑन स्टेडियम्स एंड दिल्ली मेट्रो, ये सारा GIZ के सपोर्ट में हुआ था। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ बल्ब के बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो ये सारी चीजें अपने GIZ का सपोर्ट रहा है किसी न किसी पॉइंट में। आज के डेट में 4 वर्टिकल्स पे GIZ काम कर रहा है: एनर्जी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस 4 वर्टिकल्स के अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सो वी आर लुकिंग आफ्टर द एनर्जी वर्टिकल। एनर्जी में भी, रिन्यूएबल पे भी है, एनर्जी एफिशिएंसी पे भी है। इन पर्टिकुलर आई एम लुकिंग, और आवर प्रोजेक्ट इज लुकिंग आफ्टर द एनर्जी एफिशिएंसी वर्टिकल। अब इस प्रोजेक्ट में जो करंट प्रोजेक्ट है इसका फोकस इज MSME। तो MSME इस पे हम फोकस कर रहे हैं। Essentially 2 sectors, steel and paper, but then there are other sectors also जिसको हम cater कर सकते हैं। और साथ में we are also trying to support the SDF। SDF कितने लोगों को पता है कि क्या है? State designated agencies, आपको तो obviously पता ही होगा। या फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कितने लोगों को पता है? URDC, perfect. So we also supported the PAD programs right from its inception. तो बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, जो आप अपने फ्रिज, टीवी, AC वगैरह पे देखते हैं, स्टार लेबलिंग जो है
वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है. तो दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. इट आल्सो रन्स अदर प्रोग्राम्स जैसे कि पैट स्कीम एक हो गया, एमएसएमईज के लिए फाइनेंसिंग स्कीम है कई सारी, एनर्जी ऑडिटर एग्जाम्स जो होता है वो ब्यूरो कंडक्ट कराता है. तो काफी सारी स्कीम्स ब्यूरो चलाता है. तो ब्यूरो इज अ सेंट्रली लोकेटेड बॉडी जिसके पास ये मैंडेट है फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट टू रन प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. तो अब उसी एक्ट के अंडर में फॉर द स्टेट्स हर स्टेट को एक एजेंसी अपॉइंट करनी है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. तो जिसे कहते हैं स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी. तो दिस एसडीएस बेसिकली एक्ट्स एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन द स्टेट. और वहां पे वो सारी एक्टिविटीज जो ब्यूरो सेंटर में कराता है प्लस अपने स्टेट की प्रायोरिटी के हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज भी डिफाइन कर सकता है. उसके लिए उनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज होते हैं प्लस फंड्स भी होते हैं काफी सारे. तो ये अलग अलग स्कीम्स चलती रहती हैं. तो इस प्रोजेक्ट में हम एसडीए को भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जैसे मैक्सिमम लोग एसडीए को जानते नहीं है. तो उसका रीजन ये है कि एसडीए कोई स्टैंड अलोन एजेंसी नहीं है जो कि एक्ट में लिखा गया था. बट आज के डेट में क्या हो रहा है कि कोई एक एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जैसे कि रिन्यूएबल फॉर एग्जांपल इवन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो यहाँ की एसडीए है एंड एसेंशियली इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. उनको एक एडिशनल टास्क दिया हुआ है टू बी दी एसडीए फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. तो उनके पास उनकी प्रायोरिटी पे ये नहीं आता है, उनके पास मैन पावर नहीं है. चाहे आप उनको कितने भी चीजें दे दें, फॉर एग्जांपल ब्यूरो आल्सो सप्लाइड देम विद एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स टू डू एनर्जी ऑडिट, लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं है. तो हमने क्या किया कि वी ट्राई टू सपोर्ट एसडीएस ताकि पहला कि दे एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट सोर्स एनर्जी इंडस्ट्री के लिए. जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितनी स्कीम्स चल रही हैं विद वेरियस मिनिस्ट्रीज लाइक डीआईसीज में कुछ निकाला था कि अगर आप एनर्जी ऑडिट कराते हैं तो 75% ऑफ द एनर्जी ऑडिट कॉस्ट कुड बी रिम्बर्स्ड. तो इस तरह की स्कीम्स है लोगों को पता नहीं है. तो एसडीए कुड एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उस स्टेट में गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के लिए, आप अगर एसडीए के पास जाते हैं तो आपको पता चल जाए. दिस वाज वन. द सेकंड पॉइंट वाज कि उनको जो हमने ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं उसको यूज करके कुछ काम हो. तो ग्रीन ट्री इज सपोर्टिंग अस इन दैट. सो ग्रीन ट्री ने वहां पे लोग डिप्लॉय किए हैं इन महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी एंड कर्नाटका. और इनके लिए डेडिकेटेड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स बने हैं विद इन दी एसडीए और वो उसको यूज करके ऑडिट्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं. एंड अलाइड बॉस्टन इज आवर पार्टनर इन कंडक्टिंग द ट्रेनिंग. तो अलाइड बॉस्टन हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन हैविंग ट्रेनिंग्स ऑन आईएसओ. बहुत सारे लगभग सारे आईएसओ की ट्रेनिंग देते हैं प्लस इंप्लीमेंट भी कराते हैं आईएसओ. तो ये नटशल है इस प्रोग्राम का जो कंस्ट्रक्ट था. एंड देन बीआईए जो नागपुर की एसोसिएशन है एंड एपीएस इंटरनेशनल ने सपोर्ट किया टू इंक्रीज द आउटरीच. तो इस तरह से ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ, डेवलप हुआ एंड प्रॉब्ली आगे भी हम इस पे कुछ कर सकते हैं. एक पार्ट जो कि सर बता रहे थे सीबैम इंटरनेशनल कंप्लायंस के लिए आएगा या इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का कमिटमेंट किया हुआ है. इसके अलावा आपके लिए भी कुछ है. अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो भी आज के डेट में अगर आप देखेंगे बिकॉज आवर ऑनरेबल पीएम हैज कमिटेड 2070 एज द नेट जीरो टारगेट. तो बहुत सी कंपनियां जितनी इंडिया में है जो बड़ी कंपनीज हैं वो खुद के नेट जीरो टारगेट्स ले रही है. फॉर एग्जांपल टाटा या महिंद्रा, उन लोगों ने 2040 को अपना नेट जीरो टारगेट बताया है. सिमिलरली अदर कंपनीज आर आल्सो टेकिंग देयर ओन नेट जीरो टारगेट्स. तो जब वो नेट जीरो का टारगेट लेते हैं तो वो अपने पूरे सप्लाई चेन को ग्रीन करना चाहते हैं. तो अगर आप में से कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी को सप्लाई कर रहा है और आज वो नहीं भी पूछ रही है इस बात को, तो ये श्योर है कि आने वाले 2 साल के अंदर में वो आपको कहने लगेगी कि भाई अपना एनर्जी अकाउंट करो, अपना एमिशन अकाउंट करो और मुझे बताओ और कैसे उसको कम कर सकते हो, उस पर काम करो. तो दिस इज द फ्यूचर. ये होना ही है. तो आप चाहे आज उसके डायरेक्टली आप उससे इफेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये सबके लिए इम्पैक्टफुल है. ये सबके बिजनेस में आने वाला है. तो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी हम इसे इम्प्लीमेंट कर लें हमारे लिए भी अच्छा है और आगे हम अपने प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, पैसे भी बचेंगे. तो विद दिस आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम आई directly hand over to Venkat ji. Venkat, if you want to say something or you directly want to start, it's up to you. I think the whole day is mine. Yes, whole day is yours. Thank you. Thank you for
थैंक यू पीयूष जी, आपने बहुत ही अच्छे इंसाइटफुल थिंग्स दिए, प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। और जैसा सर ने आज मेंशन किया कि आगे जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी को लेके हो ना हो, हमें आगे आने वाले टाइम में मैंडेट होगा ये चीज, क्योंकि हर कोई अपने आप में एनर्जी की कॉस्ट को बचाना चाह रहा है और आगे इंडस्ट्री को फोकस करना चाह रहा है, नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना चाह रहा है। अगर नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना है तो हमने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने पड़ेंगे, और वो कम करने का एक जरिया एनर्जी बहुत ही प्राइमरी सोर्सेज है हमारे। इसी के लिए हमने जो ISO 50001 प्रोग्राम और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, वो उन सब में आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। तो इसके लिए जो हमारे वेंकट सर हैं, अब पूरा फुल डे इन्हीं के पास रहेगा। इनका 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इज एन सर्टिफाइड मतलब ISO 50001 ट्रेनर एंड ESG इम्प्लीमेंटर, और ये आपको हर वे में हेल्प कर सकते हैं ISO की ट्रेनिंग्स में, प्लस इम्प्लीमेंटेशंस में, ESG इम्प्लीमेंटेशंस में। नाउ मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा वेंकट सर को। So please, Venkat sir, just give me a chance to welcome you. Welcome you. Thanks. नाउ मैं BIA में प्रशांत महतो साहब का, विशाल अग्रवाल जी का, एलन कौशिक जी का, इन सब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने में हमारी मदद करी है। एंड पीयूष शर्मा जी जो GIZ से हैं और इस प्रोग्राम को बी के साथ मिलकर कोलैबोरेट कराने में हमें हेल्प कर रहे हैं। नाउ प्रोफेसर केकर साहब जिन्होंने आके एक थोड़ा इंसाइटफुल थॉट्स दी। I will just give thanks all of the participants कि वो आप यहाँ पर आए हैं and be the part of these things। और मैं आपको announce करूँगा कि एक छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं, then we'll begin for with the training session of full days। Thank you very much। The tea is arranged at the back of the thing।